Hey guys, so this is Kamaljeet Singh again with one of the travel videos. So इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हमें सबको एक पॉज चाहिए और तकरीबन जब मैं पॉज लेने की सोचता हूँ तो मैं हिमाचल की तरफ रुख करता हूँ। और जब हम हिमाचल की तरफ रुख करते हैं तो तकरीबन हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, और इस रोड में कुछ ऐसी जगह हैं पीछे छूट जाती हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, फ्रेंडली ऑन पॉकेट्स हैं और उस भीड़ भाड़ से दूर हैं, जैसे कि पालमपुर। और जब हमने पालमपुर आने का सोचा तो पहला ही क्वेश्चन था कि रहा कहाँ जाए, और जब ये रहा कहाँ जाए वाला क्वेश्चन आया तो हमने चूज़ किया द रॉयल ग्रीन बड्स। आप अगर देखेंगे तो मैं एक चाय के बागान में बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे ही एक स्टे है और पीछे स्नो कैप्स माउंटेन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्टे रॉयल ग्रीन बड्स में कैसा रहा, जो कि एक रिजॉर्ट टाइप है पूरे चाय के बागान के साथ, और इनकी चाय की फैक्ट्री जिसके बिल्कुल सामने मैं बैठा हुआ हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे आए, इनका जो सर्विस सेक्टर है, जो इनकी पोलाइटनेस है, वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा इसमें, और इस होटल का जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लिंक भी दूंगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। सो लुक एट दिस द ब्रेकफास्ट एरिया. सो दे हैव tea garden which I'll be showing it later. So this is their breakfast area. Look at this, a beautiful clean area they have. It's very clean. You can have the breakfast outside as well if you want to have in the sunshine. हाँ जी सर, मैं 2 मिनट एक वीडियो कंप्लीट कर लूँ। So we arrived on our bikes and now the thing is we'll be having a rental bikes here. So this is the entry to the rooms. Let's see guys how they have maintained the ambience. There's continuously music which is played when the guests are around, so they make the things more positive. They have rooms up. This is a hall for dining, as they don't have that much of the guests, so they don't have chairs placed. This is a room for your calls if you want to take any calls, something like that. Look at the rooms guys. So if you're coming with families, I strongly suggest this place. I'll jot down the contact details and map location in this video.
in the in the description section. Because I really like this place. It's close to nature, really good. I'm just going to the stairs to just show you altogether a different view. See this. Green Buds टी फैक्ट्री विच दे मेक टी. यहाँ पे ये चाय बनाते हैं. ये इनके चाय के बागान है, वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा सब. और दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड नाइस. सो लेट मी शो यू द व्यू, द ऑपोजिट व्यू विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर रूम्स विंडो. तो जब भी आप यहाँ पे रूम बुक करते हैं, प्राइसेस आर वेरी वेरी इकोनॉमिकल. दिस इज़ अ टी फैक्ट्री वेयर दे मेक द टी एंड दिस इज़ their farms. This is all tea farms. You can see people. Look, so these are the people who are like cultivating tea. Look at the view. I'll be sharing the link and the map, Google locations. Look at this view, guys. Just look at it. And this hotel is at a perfect location. The faculty is very nice. Hey guys, so this is Palampur Zoo. A great place for kids. So the hotel we are staying is just walkable distance. आप just walk कर सकते हो from Royal Green Buds where we are staying. Very beautifully maintained. This very beautifully maintained. Guys, how huge they are. Massive. The national bird. So the main attraction is here. The big cats. 4 of them. Here he comes. काके तो उड़ रहा था, वे बात मर गए. Look at the big cat. चलो 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 चलो. ओके दा. चलो रंग की ताई. तेरा चिट्टा खड़ा लगा के देखना. ओ को मंडे कहां जंगल जरूर. Hey guys, so हम आ चुके हैं भागसू नाग वाटरफॉल पे, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे. ये पड़ता है मकड़ौड़गंज के पास. सो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी इस वाटरफॉल से, बट ये खरा उतर नहीं पाया. शायद इसलिए बिकॉज मैं मुंबई से हूँ और हमारे जब मॉनसून होता है तो वी हैव मैसिव वाटरफॉल्स. शायद इसलिए थोड़ा कम था, या ये भी हो सकता है कि शायद जब बरसात होती हो तो इसका कुछ विराट रूप हमें दिखता हो. बट अभी के लिए आई विल गिव 4 out of 10 for this waterfall. Just if you have limited time, I think you can skip it because there's a lot of traffic jam as well, so you can skip it.
Stay tuned, I'll update you, and just check out the videos and photographs which are being taken at this waterfall. Stay tuned guys, bye. Oh! So this is the main waterfall. Little bit disappointed, but still a waterfall. So वहाँ से water is coming downwards, and this is a small little pond. होटल की तरफ जा रहे थे और एक बहुत ही खूबसूरत व्यू ने हमें रोका, तो आपको भी दिखाता हूँ वो व्यू. Look at this. Wow. वो देखो आई. Kilometers away from Palampur, there's snowfall from December till January, and all these mountains are full of snow. But the month is of April, and you can still see snow-capped mountains. Beautiful. It's just a request from my side, guys. Whenever you visit here, just don't spread any trash or polythene bags. Look at this. Just carry a polythene bag and always collect whatever leftover packets you have. So because Himachal is beautiful, and if you want it to be beautiful forever, you have to take care of it. So just a request, just keep it as beautiful it is for the upcoming generations, so they can also view what you have seen.